Namaskaram and a very good evening once again. How are you guys doing? I hope you're having a fantastic Monday or a mundane Monday. Am I live? Am I audible, visible? Is everything fine at our end? Good evening, good evening, good evening. Namaste. Okay, once I have a confirmation from you, then we can begin. Are we not live? What has happened to the hotkeys? God damn it. Okay, I think we are. Hotkeys, thank you. You're hot. You're working. All right. Good evening. Good evening. क्या हाल है? I am fine. I am fine. Thank you. All right. So today we have a short session, quick one. We'll do one RC from CAT 2021 slot 2. It's easy. Take it as a small, quick test and try and get all your 4 answers right because it's that easy. Okay. My day was fine. I get one off in the week, which is on Monday, and I spend it with you. So what else do you expect? I mean, you guys have become my breaks. There was a time when I needed a break from you. All right, Shubha Sandhya to you too. Good evening. Let's start. All right, so I hope those of you new, my name is Karishma and I'm a VRC coach for CAT and the other MB entrances, most competitive exams in fact. And I am doing the series wherein we are doing CAT RCs, PYQs, previous year questions. And we've done a couple of RCs earlier. We've done some NMAT questions. We've done a discussion on NMAT, SNAP and ZAT. And we've also done some TETA questions or para jumbles, para completion, para summary, odd man out also. So all of those are available in various playlists on the channel. The channel is relatively new, so you do not have to search much. Everything is like really there at a drop of a hat. So if you've subscribed to the channel, you will get the notifications. If you haven't, then please do, in case you're preparing for some exam, or suggest it to your friends if you know anyone in that circle. Let's begin with today's class. I agree, Shravya. Yeah, okay. Let's go ahead. Okay, let's start reading. I will take up your questions, both personal and professional, in the end, okay? So those of you who want to talk can stay, but let's solve first. आरसी पे ध्यान दो, मुस्कुराहट पे ध्यान दोगे तो नंबर ऐसे आएंगे कि मुस्कुराहट छिन जाएगी. हम बता रहे हैं तुमका. पढ़ लो. मुस्कान. अलग ही जवानी चढ़ रही है भैया. Why no bhaiya? You call me Maiya, I call you bhaiya. It's tit for tat. I declared it last week itself. How come you've forgotten? Can we go to the second slide? Are we done? Come on, come on. Cool, let's go again.
Okay, I think I'll write it here. It's prevalent in much of the West. Oh, what happened to my pen? Prevalent in much of the West. That's what it says. What has happened to the tablet today? Mood swings, maybe? It's not accepting my handwriting. Okay. Can we go ahead? Can we go ahead? Yes. Aditya, who will tell you the meaning in the exam? So you have to take it as a test, right? So you can't ask me the meanings. Not now, at least. चले आगे. अरे सॉरी मत बोलो, ये सॉरी की कोई बात नहीं है. हरी अप जल्दी जल्दी. इतना बड़ा पैसेज नहीं है जितना तुम लोगों ने टाइम लगा दिया. Okay, last slide. Are we done? Can we go to the questions? There are 4 questions, all of them pretty doable, within 1 minute each. Okay? Yes. Okay, let's do question number 1. Come on. Write the answer in your notebook and then we'll discuss in the end. Can we go ahead? Yes? Cool. Question number 2. हो गया सबका? चले आगे. Question 3.
What is nice about it, Vishesh? I have working weekends. In fact, the most hectic weekends. चले करें लास्ट क्वेश्चन जल्दी, झटपट फटाफट. Okay, last question. Are we done? Okay, how many do you, so just write it in your notebook, okay? Not in the chat box. Write it in your notebook, okay? And we'll give ourselves marks today. We'll give ourselves +3 and -1. Okay, there are no zeros. I hope you solved all the questions. Okay, so just see how much do you score out of 12 and tell me in the end. Also, just write your estimated correct attempts, your ECA, okay? And then we'll see whether you are right in judging yourself or not. So maybe right now you think that all your 4 attempts are correct, or maybe you're sure about 3 out of 4. But you get, let's say, 4 out of 4 correct. It means you underestimate yourself. If you get 2 out of 4 correct, it means that you're overestimating yourself. So how good is your decision making? You need to understand this, because VARC is largely about being sure. You know, there is this YouTube narrative going on. I don't know why and how do people say just about anything. जैसे VARC में ज़्यादा क्वेश्चन करनी चाहिए, क्योंकि पता थोड़ी होता है कि क्या सही है क्या गलत है. तो बेटा नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, तो फिर कैसे सॉल्व करते हो? तो तुक्के लगाते हो. तुक्के लगा के फिर तुम यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हो इस बात का, और दुनिया को भी यही सीख देते हो. मतलब बहुत ऑडेसिटी चाहिए ऐसा करने के लिए, इफ़ यू नो द वर्ड. पता नहीं तुम्हें ऑडेसिटी का मीनिंग को भी लेके श्योरिटी है या नहीं है. तो प्लीज़ ऐसी बकवास बातें मत करो, ठीक है? आई कांट शुगर कोट इट. पता नहीं होता. ऑल राइट, इज द पैसेज क्लियर? Is the passage clear? Do you have anything to ask? Anything that you've not understood? Anything which is not clear? Pilloried कोई पूछ रहा था. Pilloried is to attack. Pillory is basically that wooden framework, you know, where your head comes out and your hands come out and the remaining body stays पीछे. और ऐसे लॉक कर देते हैं आपको पनिशमेंट में डालने के लिए, राइट? तो वहाँ से ही आया. Pilloried means to attack, criticize. Okay, anything else that you've not understood? So the passage is about dying languages, something that I have been always very vocal about. So you can't really, you know, ignore the fact that your indigenous languages are dying. You need to preserve them. We discussed this even on 15th August. Little did I know that we'll be talking about it again, but in the form of an RC passage. Yeah? Can we go ahead now? Okay, chalo. What is your answer to the first one? This says Welsh language. Author ने क्यों mention करी है? Which kind of question is this? Which type of question is this? Which type of question is this? Contextual usage, right? Specified कैसे? Author क्या कहना चाहता है ये पूछ रहा है, तो contextual usage होगा ना. तो Welsh language कहाँ लिखी है? ये लिखी है. Welsh, long stigmatized. Welsh is actually the language of Wales, and disparaged. Disparage is to criticize, to condescend, to demean, to belittle, नीचा दिखाना. By the British state has rebounded, वापस came back to life with vigor. Vigor is energy. तो Welsh language ने bounce back करा है, और इतना स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएटेड था, और ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि वेल्स की वेल्श मर जाए और अंग्रेजी चल पड़े, लेकिन वेल्श ने खुद को रिवाइव किया. इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है. Such trading up and out of a speech form occurs for complex political, cultural and economic reasons, sometimes voluntary for economic and educational reasons, often amplified by state coercion or neglect. State coercion is state force, coercion is force, right? और इसके पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तस्मानिया का, कि कभी कभी पूरी के पूरी कॉलोनी ने अगर इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार डाला है, या कोलोनाइजेशन में कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन मारी गई है, तो पूरी पॉपुलेशन के साथ लैंग्वेज चली जाती है. जब कुछ लोग बच जाते हैं, when some people are left behind, they shift their language to a more popular language, right? And then it says that Welsh has somehow survived. So what is the author trying to do? Let's apply the elimination here.
Let's start with point number 4. Vulnerable languages can rebound with state effort. Is this the answer? If no, then why? Comprehension improve करके. So the problem with option 4 is state effort. State ने effort नहीं मारा है. It's not written that the people of Wales revived their language because of the government's effort. It's not written. So this is wrong. Okay? So state is not involved. In fact, state is neglecting the language, it says. 3 says, while often attacked, globalization can in fact support linguistic revival. Now this is given towards the end. This is written in the last paragraph. हमको तो ये बताना है कि author Welsh language क्यों लिख रहा है. Contextual usage में हम पीछे जाके context पढ़ते हैं और फिर आंसर मार्क करते हैं ना. यही strategy था. Going back for a few seconds ensures accuracy. We'll avoid answers that are too broad, too narrow. A little vocabulary helps us. These were the strategies that we have done. Languages can revive even after their speakers have gone through a language shift. इसके just पहले मैं तस्मानिया का example दिया कि कभी कभी जब लैंग्वेज शिफ्ट होती है तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन के साथ लैंग्वेज मर जाती है और लोग वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं जो उनकी कॉलोनी बोलती है. कॉलोनाइजेशन का एग्जाम्पल है तस्मानिया का. और स्टेट फोर्स और स्टेट निग्लेक्ट ब्ला रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज मर जाती है. फिर अचानक से कहता है कि वेल्श ने खुद को बचा के रखा है. लैंग्वेज शिफ्ट इज द ओनली थिंग विच इज गिवन ऑन द फर्स्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ हियर. ये और इसके तुरंत बाद ही हमने बोला कि वेल्श ने खुद को रिबाउंड करा है. तो ये ठीक आंसर है. लैंग्वेजेस कैन रिवाइव इवन आफ्टर देयर स्पीकर्स हैव गॉन थ्रू अ लैंग्वेज शिफ्ट. सो वेल्स के लोगों ने बचा के रखा अपनी लैंग्वेज को डिस्पाइट द लैंग्वेज शिफ्ट, despite the British was wanting them to give up Welsh and adopt English. Efforts to integrate Welsh speakers in the English-speaking fold have been fruitless. This is the opposite of what is written. They have been fruitful, not fruitless. This is opposite. So the easiest ruled out options were, I would say 2 and 4 because state effort galat hai, fruitless galat hai. 3 is also easily ruled out because this is correct, but this is not what the Welsh language example shows. A lot of people would mark 3 because उनको लगता है कि 3 true है. Please understand that it's not just about marking what is true, it's about marking what the question is asking. More often than not, people get so excited in RC or so demotivated, उनको लगता है अच्छा ये तो लिखा पैसेज में, खट मार्क कर दो. पैसेज में लिखा है ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी तो देखो. तो क्वेश्चन पूछता है वेल्श लैंग्वेज का उदाहरण क्यों लिखा है. तो 3 इज नॉट द आंसर. ग्लोबलाइजेशन की बात तो एंड में हुई है और ग्लोबलाइजेशन का वेल्श से कोई लेना देना नहीं है. Therefore the answer is 2. I hope this is clear. Correct, Utkarsh. Okay, let's go ahead. What about the second one? What is your answer? Okay, so you just have to go to the second slide and you will get your answer here. इसमें लिखा है कि कभी कभी लैंग्वेज इसीलिए मर जाती है क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं, कल्चरल रीजंस रहते हैं और इकोनॉमिक रीजंस भी रहते हैं. कभी कभी हम जानबूझ के वॉलंटरी इकोनॉमिक और एजुकेशनल रीजन की वजह से अपनी लैंग्वेज को मार देते हैं, जैसे हम कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया वाले. हम अपनी हिंदी को, अपनी उर्दू को, अपनी सिंधी को, अपनी पंजाबी को साइडलाइन कर अंग्रेजी सीखते हैं. We are sidelining our languages because there are educational reasons for doing it and there are economic reasons for doing it. So because I have to go to Canada, I learn English despite the fact that there are more Punjabis in Canada maybe than there are in Punjab, I'm not sure. But anyway, so yeah, people quit their language simply because of economic and educational reasons. Sometimes the reasons are also political, cultural. And they are amplified. Amplified तो तुम्हें पता ही होगा, तुम लोग घटिया गाना सुना ही है ना, तुम लोग गाते रहते हो जो बूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, या तुम लोग और तुम लोगों के ज़मानों के गाने हैं. एनीवे, ऑल्दो ऑफन एम्पलीफाइड बाय स्टेट कोअर्शन और निग्लेक्ट. गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है. कोअर्शन इज फोर्स और निग्लेक्ट तो तुम पता ही है, जैसे तुम मेरे सेशंस को करते हो निग्लेक्ट. आज की अटेंडेंस देखो, ठीक है. तो या सो दीज आर द रीजंस. लेट्स गो बैक एंड सी. गवर्नमेंट्स प्रमोटिंग सर्टेन लैंग्वेजेस ओवर अदर्स. हाँ, दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टेट कोअर्शन एंड निग्लेक्ट. और फिर वेल्च का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी अपनी लैंग्वेज को और वेल्च को इग्नोर कर रही थी. तो गवर्नमेंट्स की नौटंकी के चक्कर में कई बार लैंग्वेजेस मर जाती है. ठीक है. हाँ देखो साकिब कितने घटिया गाने बता रहा है. बाहर निकाल दूंगी मैं क्लास से
अच्छा तुम लोग ऑनलाइन हो, अब मैं ऑफलाइन चली गई हूँ तो मैं ऐसे डायलॉग्स मार पाती हूँ, बाहर निकाल दूंगी क्लास से, एंड दे वर्क, आई टेल यू. All right, people shifting away from their own language to study or work in another language. So this is also okay, educational reasons and economic reasons. This is also given. So this can be inferred. This can be inferred. I don't know, the pen is running behind me. Tortoise ho gaya hai pen. A catastrophic event that entirely eliminates the people and their culture. This can definitely be inferred from the Tasmania example. फोकस ऑन ओनली अ न्यू लैंग्वेज एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड इंटरनेट यूज. अरे उसने तो बोला है कि इंटरनेट यूज करके हम अपने इंडिजिनस लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं और बचा सकते हैं. और उसने एग्जाम्पल दिया है कि नेपाल के हिमालयाज में बैठे बड़े बुजुर्ग अपनी लैंग्वेज सुन सकते हैं. ठीक, आदित्य सीपी में कह चुकी हूँ, सीपी वाला कोई दिख नहीं रहा है मुझे. ठीक, या ऑल राइट, सो द आंसर इज 4. All right, so those, okay, Anil and Sakib are bonding again now. History is repeating itself. At this time, they're bonding over music. God bless your jodi. तो कितने प्यारे हो ना तुम लोग, ऐसे बोल देते हो हम लोग मैम के फेवरेट है. इतने कॉन्फिडेंस से मेरे प्रति भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं अपनी बीवी का फेवरेट हूँ. आई लाइक योर, यू नो, योर ऑप्टिमिज्म, योर ऑडेसिटी, योर करेज. लाइक आई लव यू. या you are. Aditya, you are. All right, let's do the third one. What is your answer? कृति, अनिल ने सही, साकिब सही, ये भी ठीक है. किसको लव यू बैक बोल रहे हो तुम? नौडियाल साहब को. तो मुझसे ही सीखा है तो फिर मुझसे ना घमंड करना भी तो सीखो ना मयंक. ओके, वी आर सेइंग दैट इंडिजिनस लैंग्वेजेस के बारे में क्या इन्फर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो तुम लोग बोल रहे हो टू इन्फर नहीं कर सकते हैं. क्या लिखा है शुरू में? इट इज ईजी टू फॉरगेट एंड पीपल आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेजेस. तो कैसे नहीं इन्फर कर सकते इसको? इन प्रिंट, ऑन एयर एंड ऑनलाइन. सो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेजेस. ठीक, आई नो आदित्य, पुराना प्यार है ना, क्या करें. सो देन ऑल्सो यू शुड नोट दैट दीज गाइज हैव नेवर मेट मी. So we can infer all of the following about indigenous languages from the passage, except that they are repositories of traditional knowledge about the environment and culture can be inferred from here. It says transmission of culture and environment. हो गया ये? ठीक, साफ साफ दिया हुआ है. Okay. Then it says people are increasingly working on documenting these languages. This can be inferred from here. The people are working on projects to protect their languages. ठीक. Okay. Then it says they are in danger of being wiped out as most can only be transmitted orally. ये भी तो पूरे पैराग्राफ, पूरे पैसेज में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है. Yeah, here orally vulnerability because they are transmitted orally. बोल बोल कर. Orality is fragile. Yeah. So therefore, their vocabulary and grammatical constructs have been challenging to document, not given anywhere. ये कहाँ लिखा है कि इनको डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है? वोकैब और ग्रामर में डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि इनकी वोकैब और ग्रामर की बातचीत कम है. ये रहा. इंडिजिनस लैंग्वेजेस आर मोर देन अनयूजुअल वर्ड्स एंड इंट्रीगिंग ग्रामर. सो लैंग्वेज इज मच मोर देन वर्ड्स दैट आर अनयूजुअल और ग्रामर दैट इज इंट्रीगिंग. It does not say that it is difficult to document. How can you say that they are challenging to document? This cannot be inferred. So therefore the answer is 4. Understood? Yes? What have you done, Kriti? ये किस बात के लिए इतना I have लिख रही हो? Okay. What about this one? What have you marked? This is the easiest question ever. Achha, you've met me. Okay. Correct. 3. Greater multilingualism. This is given in the end. कि ग्लोबलाइजेशन नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म हमारा प्राइमरी कंसर्न है. और मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी मदद कर सकता है और कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट दुनिया में रहने के लिए. और टेक्नोलॉजी के एक्सेस के साथ हम अल्टीमेटली मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. कृति बैग गया डलवा रही है.
इसके लिए पूछ रही हो फर्स्ट वाला कहाँ से इन्फर कर सकते हैं, मुक्का मार देना मैंने, यहाँ लिखा नहीं है ये कल्चरल ट्रेडिशन, मेडिसिनल प्लांट्स, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. ठीक, आई एम नॉट श्योर सिमी, आई हैव नो knowledge of the mocks that you are taking. ठीक है, सो इजी पैसेज आई वुड से, बड़े आराम से 4x4 लाए जा सकते थे. और you should have taken 6 minutes overall, because reading this passage must have taken 2.5 to 3 minutes, and doing the questions must have taken 3 minutes, not more than that, because the questions are short and they're quick. In the exam, this was a must-do passage. Okay, it's coming from linguistics, and there were 519 words, and this is the source of the passage in case you're interested in reading. Elimination ही करना है अल्ताफ. ठीक है, so 3 out of 4 is acceptable, 4 out of 4 is what I am expecting from you. Okay, so I'll accept I don't know 3, but I expect 4. ठीक, like I said Simi, I don't know mock कितने मार्क्स का था, क्या लेवल था, तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ. That's what I'm saying. 4 out of 4, 3 out of 4, 12 is awesome. 3 out of 4 which means 8. ये पैसेज में लगेगा थोड़ा 2.5 मिनट कम से कम. You will take 2.5 minutes in this passage, because at some places on the second and the third slide you slow down a little, but you can't take more than 3 minutes anyway. The questions don't require it. Okay, so 3 is acceptable, 4 is great. Okay, so that's my input. You can take a screenshot, and if you want to read the original article, please do that as homework. We'll hopefully meet on Friday now. Hopefully, okay, we'll update you about it on the Telegram channel. The Telegram channel link is in the description box. It has also been shot in the live chat if you notice. You can comment with your feedback and suggestions. You can share it, like, subscribe, okay, and on Friday we'll do NMAT questions. Okay, in the exam, average time per passage for such kind of a passage is 6 minutes. If the passage is tougher, it can be 8 minutes. You cannot afford more than 8.5 minutes per passage in the exam. All right, anything else that you want me to answer? Any more questions? दिल अभी भरा नहीं साकिब साहब, which is fine. We'll practice NMAT questions on Friday. Can we also have a longer session? Are you guys ready for doing more questions? ये 10 क्वेश्चन करके तुम NMAT पढ़ोगे तो तुम्हारा हो गया फिर तो तैयारी. Let's do 15-20 questions. Are you up for a 1-hour session on YouTube? Tell me. Mocks का एनालिसिस पढ़ो, सिमकैट्स का एनालिसिस देखो. सिमकैट 7 चल रहा है आजकल. आई होप ऑल ऑफ यू टेकिंग इट. नेगेटिव मार्किंग कम करने की कोशिश करो कृति. अच्छी बात है ना विशेष. IIFT में भी टाइम है, करेंगे. we'll do IIFT. let's do NMAT first. that's the first exam. Narsimha, you also came late. I don't say good evening to latecomers. It's very difficult, Ankit. Trust me. I'm just trying to be regular. इसीलिए मेरी एक छुट्टी भी चली जाती है तुम लोगों के साथ. 2 घंटा. Oh my God. Nobody takes 2-hour sessions on YouTube. Do they? Yeah. On Friday we'll do. हाँ, I'll put reasoning questions. I'll put reasoning. I'll put vocab, grammar, everything. आरसी नहीं करेंगे. आरसी कैट का कर रहे हैं ना, तो अभी आरसी से थोड़ा NMAT में ब्रेक ले सकते हैं. हाँ, एनालिसिस करना है. वील ऑल्सो डू एन एनालिसिस सेशन. आई रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट. एनालिसिस सेशन करेंगे, एंड देयर इज रूलिंग आउट क्लोज ऑप्शंस भी करेंगे. कूल कृति. दिवाली के तुरंत बाद. माइका का सेशन वील ऑल्सो डू. फॉर्म आएगा तो कर लेंगे. All right, so then let's wind up for today. Go and eat your food and enjoy yourselves. Okay, take care.